रहीम अस्सलाम वालेकुम सबको खैर मकदम। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। कश्मीर बनाम जम्मू इस वक्त मुकाबला जारी है। कश्मीर प्रोविंस की टीम जो है इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है और 8 स्कोर हैं। 6 ओवर्स के अख्ताम पर 8 स्कोर है इस वक्त कश्मीर का। JKCA ऑरेंज कश्मीर की टीम ने टॉस जीतकर जो है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और JKCA ब्लू यानी कि जम्मू की टीम जो है इस वक्त फील्डिंग कर रही है। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव नशरियात को जो है आप शेयर कीजिएगा। बड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में। शॉर्ट गेंद पुल किया ऑन द स्ट्रोक और गेंद जो है बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। कामरान इकबाल के बल्ले से ये पहला छक्का गालिबन इस इनिंग्स का और इस मैच का कामरान इकबाल के नाम। कुछ देर से जो है लेट जो है हमने ये लाइव नशरियात शुरू की है, उसके लिए हम माजरत खाएं। क्राउड यहाँ पर अलाउड नहीं है। क्राउड के बिना जो है इस वक्त ये मुकाबला इस वक्त जारी है। जम्मू बनाम श्रीनगर या जम्मू बनाम कश्मीर इस वक्त मुकाबला जारी है। बड़ा मुकाबला इस वक्त शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में इस वक्त जारी है। कश्मीर की टीम बल्लेबाजी कर रही है। कामरान इकबाल जो है इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। खूबसूरत मंजर और प्लेइंग 11 कुछ देर बाद जो है, अभी तक हमारे पास जो है प्लेइंग 11 नहीं है, तो जो ही प्लेइंग 11 हमारे पास पहुंचेगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट गेंद इस मरतबा कामरान इकबाल ने गेंद को देखा और जाने दिया विकेट के कीपर के लिए। रामदयाल बॉलिंग कर रहे हैं हमारे अपोजिट एंड से। और जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबसे गुजारिश यही है कि इस लाइव नशरियात को शेयर कीजिएगा, क्योंकि लाइव एंड एक्सक्लूसिव इस वक्त जो है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर यह मुकाबला जारी है। तो और लोगों तक ये मुकाबला पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा इस लाइव नशरियात को। रामदयाल आए, गेंद की शॉर्ट गेंद, फिर से गेंद को देखा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के लिए। बेहतरीन मंजर इस वक्त शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में। और अगर वाकई कश्मीर में किसी ग्राउंड को लॉर्ड्स कहा जा सकता है तो मेरे ख्याल से ये ग्राउंड जो है बिल्कुल उसके लिए फिट बैठता है। लॉर्ड्स ऑफ कश्मीर शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर। जम्मू बनाम कश्मीर ये मुकाबला इस वक्त जारी है। रामदयाल इस ओवर में अगली मरतबा आए, गेंद की शॉर्ट गेंद, इस गेंद को क्लाइंग के उपयोग से मोड़ दिया है मिड विकेट की जानिब। स्क्वायर लेग से खिलाड़ी जब तक दौड़ के जाते फील्ड करते तब तक दोनों खिलाड़ियों ने दूसरा रन भी जो है मुकम्मल कर लिया है। और भी लोग जो हैं आपके साथ साथ ये मुकाबला जो है देख पाए तो इस लाइव नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा। ज़हूर सुल्तान, शौकत मीर, असगर अफगान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सबका खैर मकदम। रामदयाल इस ओवर में अगली मरतबा। रामदयाल दौड़ना शुरू की, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की शॉर्ट गेंद, इस गेंद को हल्के हाथ से स्लिप की जानिब धकेला था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। कामरान इकबाल और जियाद मागरे जो हैं बैटिंग कर रहे हैं कश्मीर के लिए। और इस वक्त जो हैं 1000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबका खैर मकदम। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लाइव एंड एक्सक्लूसिव जो है इस वक्त ये मुकाबला कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के पेज पर जो है आप देख रहे हैं। और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस लाइव नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा। रामदयाल राइट आर्म फास्ट बॉलर, दूर शोर से सामने कामरान इकबाल। बड़ा मुकाबला है और जो ग्राउंड है कोशिश करूंगा मैं ओवर के खत्म होने के बीच में जो है इस ग्राउंड की चंद झलकियां आप तक पहुंचाने के लिए।
रामदयाल अच्छी गेंद, स्टंप्स में आती हुई गेंद को खेले, मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और खत्म हुआ रामदयाल का। प्लेइंग 11 मुबशर अभी हमारे पास जो है मौजूद नहीं है। 6 ओवर्स का खेल जो है इख्तिताम पजीर हो चुका है। 19 स्कोर है कश्मीर की टीम का। इरफान खान, राजा सब्जार, नवीद अंजुम, जाकिर वाचिंग फ्रॉम कनाडा, खैर मकदम बादशाह, सबका खैर मकदम। 1100 से जो है ऊपर इस वक्त व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। सुलेमान सलीम, प्लेइंग 11 जो है अभी कुछ देर में जो है हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी जो है प्लेइंग 11 हमारे पास नहीं पहुंचा है। जुनैद शाह, आसिफ बाई, मुदस्सिर, सबका खैर मकदम। बॉलिंग में तब्दीली की गई है। कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से जो है गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। स्पिन अटैक लगाया गया है अब जम्मू की तरफ से। आबिद मुश्ताक को लगाया गया है अब कमेंट्री एंड से, और सामने जैद मागरे, सज्जाद, इरफान रसूल, रिजवान लोन, इम्तियाज डार बॉलर। अच्छी गेंद, स्टंप्स में आती हुई इस गेंद को वापस खेले, बॉलर ने जो है फील्ड करके गेंद को अपने हाथ में उठा लिया है। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 7वां ओवर इस वक्त जारी है। 19 स्कोर है कश्मीर का। शेरी कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर से बराह रास्त आप ये मुकाबला। बड़ा स्ट्रोक हवा में थी, लेकिन पॉइंट के खिलाड़ी से थोड़ा आगे जो है गेंद गिरी थी, वरना शायद पहली विकेट गिर सकती थी कश्मीर की टीम की। स्पिन अटैक के साथ जो है बॉलिंग कर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर जैद मागरे, सामना कर रहे हैं। बॉलर चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद थी, इस गेंद को देखा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के लिए। बिल्कुल कैचिंग पोजीशन में एक खिलाड़ी को बिल्कुल बल्लेबाज के सामने रखा है। तो 1400 के करीब इस वक्त लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सबका खैर मकदम। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। सिर्फ और सिर्फ जो है आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पेज पर जो है ये मुकाबला इस वक्त देख सकते हैं, तो इसको और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। क्राउड जो है अलाउड नहीं रखा गया है यहाँ पर, तो क्राउड के बिना ये मुकाबला इस वक्त जो है जारी है। इस गेंद को खेला, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ जो है गेंदबाजी कर रहे हैं। प्लेइंग 11 ऑफ बोथ टीम्स इरशाद बट कुछ देर के बाद जो है हमारे पास प्लेइंग 11 पहुंच जाएगा और इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी भी जो है प्लेइंग 11 हमारे पास नहीं पहुंचा है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, क्राउड अलाउड नहीं है, किसी भी जो है शख्स को ग्राउंड के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लाइव और एक्सक्लूसिव जो है सिर्फ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पेज पर जो है आप ये मुकाबला इस वक्त देख रहे हैं। बैटिंग कश्मीर की टीम कर रही है और फील्डिंग साइड जो है जम्मू की टीम है। जम्मू बनाम कश्मीर, ये मुकाबला इस वक्त मल्टी डे JKCA सीनियर मल्टी-डे फाइनल है। जम्मू बनाम कश्मीर 3 दिन का मुकाबला होगा और 3 दिन के बाद जो है पता लग जाएगा कि कौन सी टीम जो है यहाँ से फतहयाब होगी। फिलहाल आप इस लाइन नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा। नए बॉलर अब हमारे अपोजिट एंड से जो है गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। उनके सामने जैद मागरे, रामदयाल गालिबन शायद जो है दोबारा से बॉलिंग करने के लिए आए हैं। सामने जैद, अच्छी गेंद थी, इस गेंद को हल्के हाथ से गाइड करना चाहते थे जियाद मागरे, माफ कीजिएगा, कामरान इकबाल
कुछ बैटिंग कर रहे हैं कश्मीर की तरफ से रामदयाल। अपने बॉलिंग मार्ग पर पहुंचे रामदयाल। अब्दुल समद भी जो है इस वक्त गालबन सेकंड स्लिप पर इस वक्त मौजूद है। काफी बड़े बड़े नाम जो हैं इस मैच में कश्मीर और जम्मू की तरफ से जो है ये मुकाबला खेल रहे हैं। अभी प्लेइंग 11 जो ही हमारे पास पहुंचेगा हम अब तक जो है दोनों टीमों का प्लेइंग 11 पहुंचाएंगे। रामदयाल इस ओवर में अगली मार शॉट गेंद थी ऑप्शन से बाहर। इस गेंद को देखा और जाने दिया विकेट कीपर के लिए जियाद मागरे। रामदयाल ससना में मैं कोशिश जरूर करूंगा खूबसूरत ग्राउंड की जो है चंद झलकियां आप तक पहुंचाने की। खूबसूरत ग्राउंड है। रामदयाल सोर में अगली मर्तबा चले। गेंद की अच्छी गेंद थी, शॉर्ट गेंद पटकी हुई। इस मर्तबा जो है जाने दिया विकेट कीपर के लिए जियाद मागरे ने। तो ये ग्राउंड है शेर कश्मीर इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज जो है क्राउड को जो है अलाउड नहीं किया गया है। यहाँ पर क्राउड होता तो शायद और ज़्यादा जो है मज़ा आता मैच में, और क्राउड के बिना जो है क्रिकेट अधूरा है। लेकिन हम जो है कोशिश कर रहे हैं घर बैठे आप तक ये मुकाबला पहुंचाने का, और लोग उन तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। आसिफ इकबाल काफ़ी ज़्यादा जूम करना पड़ रहा है और हम जो है स्टेडियम के बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे हैं, अंदर जाने की जो है इजाज़त नहीं है। इस वजह से जो है पिक्चर क्वालिटी जो है शायद थोड़ी बहुत जो है क्लियर नहीं होगी, उसके लिए हम माजरत खा हैं और आज जो है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। प्लेइंग 11 हमारे पास पहुंच चुका है। तो इस ओवर के बाद जो है दोनों टीमों का प्लेइंग 11 जो है हम आपको बताएंगे। रामदयाल इस ओवर में अगली मरतबा आई गेंद, शॉर्ट गेंद पुल किया ऑन द स्ट्रोक। वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गेंद चंद टप्पों के बाद जो है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए जियाद मागरे के बल्ले से लगता हुआ ये चौका। प्लेइंग 11 कश्मीर की टीम का फैजल रशीद कैप्टन है, कामरान इकबाल, शेख उजैद, जियाद मागरे, जमान कुयूम, परवेज रसूल, नासिर लोन, इम्तियाज गनाई, शाहरुख डार, उमर नज़ीर और मुश्तबा यूसुफ। ये 11 खिलाड़ी हैं जो कश्मीर की टीम से इस मुकाबले का हिस्सा हैं। तो बड़े बड़े नाम कश्मीर की जानिब से जो हैं इस मुकाबले का हिस्सा है। परवेज रसूल जिसे शानी कश्मीर कहा जाता है वो भी इस टीम का हिस्सा है। फजल रशीद जो हैं कैप्टन है कश्मीर की जानिब से। रामदयाल इस ओवर में अगली मरतबा सामने जियाद मागरे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। रामदयाल आए, इस गेंद को हल्के हाथ से खेले ऑन साइड की जानिब, खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा। जम्मू की टीम का प्लेइंग 11 शुभम सुरने शुरैना, हनान मलिक, शुभम खजूरिया, अब्दुल समद, आबिद मुश्ताक, रामदयाल, साहिल लोथरा, के वाधवन विकेट कीपर, युद्धवीर सिंह और रोहित शर्मा। शुभम पंडित जो हैं कैप्टन हैं जम्मू की टीम। एक और ओवर जो है इख्तिताम पजीर हो चुका है। काफी बेहतरीन मनाजिर जो हैं इससे देखने को मिल रहे हैं। नए ओवर के साथ बॉलर अच्छी गेंद स्टंप्स में आती हुई इस गेंद को खेली मिड ऑफ पर। गालबन जो है अब्दुल समद मौजूद है। आबिद मुश्ताक गेंदबाजी कर रहे हैं।
अच्छी गेंद थी, बीट हुए इस मरतबा, काफी ज्यादा टर्न हुई थी। बल्लेबाज जो हैं आउट होते होते जो हैं बच गए। बॉलर अगली गेंद के साथ अच्छी गेंद स्टैंड में आती हुई इस गेंद को शॉर्ट कवर की जानिब खेले, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, उन्होंने फील किया स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। प्लेइंग 11 कश्मीर का सर मैं बता चुका हूं, इस ओवर के बाद और जो है बताने की कोशिश करूंगा। स्कोर अपडेट हो रहा है, बिल्कुल हमारी स्क्रीन के जो है सामने स्कोर बोर्ड है, लेकिन कुछ इशूज़ की वजह से जो है हर ओवर में वो जो है स्कोर अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने जो है स्कोर बोर्ड है और उसी को जो है देखकर हम आपको जो है स्कोर बता सकते हैं, लेकिन हर ओवर में जो है वो स्कोर अपडेट नहीं कर पा रहे हैं कुछ इश्यूज़ की वजह से। जो ही स्कोर जो है बोर्ड पर अपडेट होगा हम आपको जो है स्कोर बताने की कोशिश करेंगे। लतीफ़, मीर अहमद, फयाज, जूम जो है लतीफ़ भाई ज़्यादा करने की वजह से जो है पिक्सल्स जो हैं कट जाते हैं, जिसकी वजह से जो है अच्छी क्वालिटी जो है नहीं मिलती है। बॉलर आए, गेंद अच्छी गेंद स्टंप्स में आती हुई गेंद को खेले, अच्छा ओवर। आबिद मुश्ताक का इख्तिताम पजीर हो चुका है। थैंक्स फॉर कवरेज शौकत खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। बैटिंग कौन कर रहा है? कश्मीर की टीम जो है हाजिर तारिक भाई इस वक्त बैटिंग कर रही है और प्लेइंग 11 एक मरतबा फिर से जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो हैं व्यूअर्स अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। कश्मीर की टीम की जानिब से जो है फाजिल रशीद कैप्टन है, कामरान इकबाल, शेख उजैद, जियाद मागरे, जमान कुयूम, परवेज रसूल, नासिर लोन, इम्तियाज गनाई, शाहरुख डार, उमर नजीर और मुश्तबा यूसुफ जो है प्लेइंग 11 का हिस्सा है। और जम्मू की तरफ से शुभम पंडिर कैप्टन, सुरनेश रैना, हनान मलिक, शुभम खजूरिया, अब्दुल समद, आबिद मुश्ताक, राम दयाल, साहिल लोथरा, के वाधवन विकेट कीपर है, युद्धवीर सिंह और रोहित शर्मा, ये जो है 11 प्लेयर्स जम्मू की तरफ से इस मुकाबले का हिस्सा है। नया ओवर शुरू होने वाला है। बॉलर आए, गेंद की इस गेंद को खेले हवा में और पहला झटका, आसान सा कैच। युद्धवीर सिंह गेंदबाजी करने के लिए आए थे और पहली गेंद पर ब्रेक थ्रू दिलाया। जियाद मागरे की इनिंग्स का खात्मा, आसान सा कैच दे बैठे वहां पर, और जहां पर खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने कोई गलती नहीं की और पहला झटका कश्मीर की टीम को लग चुका है। शेख उसैद अब अगले बल्लेबाज जो हैं बैटिंग करने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने। जुबैर लिफ्टी हैं कश्मीर, डॉक्टर शबरीज नबी हमारे साथ जुड़े हैं। सबका खैर मकदम शेयर जरूर कीजिएगा इस मुकाबले को, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पेज पर जो है आप ये मुकाबला इस वक्त देख सकते हैं। लाइव एंड एक्सक्लूसिव जो है सिर्फ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पेज पर जो है ये मुकाबला आप देख सकते हैं। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइन नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कश्मीर के बड़े बड़े सितारे जो हैं इस वक्त इस मुकाबले का हिस्सा है और इनके फैंस तक जो है ये मुकाबला पहुंचाने के लिए इस लाइन नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा। शेख उजैद अब बल्लेबाजी करने के लिए आए। 3 स्लिप्स जो हैं रखी गई है युद्धवीर सिंह ने। आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं युद्धवीर सिंह। चले अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की लेग स्टंप से बाहर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, बीट हुए और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तान में। कश्मीर की टीम जो है इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है। कामरान इकबाल और शेख उजैद जो है,
शेख उसैद इस वक्त कश्मीर की तरफ से जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक विकेट ऑलरेडी जो है गिर चुका है कश्मीर का। युद्धवीर सिंह एक मरतबा फिर से अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद थी, इस गेंद को मिड ऑफ की जानिब खेले खिलाड़ी मौजूद, बेहतरीन गेंदबाजी का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त युद्धवीर सिंह। और पहले ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ी विकेट हासिल की थी युद्धवीर ने और हल्का सा जो है प्रेशर में लाकर खड़ा कर दिया है कश्मीर की टीम। इस ओवर में अगली मर्तबा युद्धवीर सिंह, शॉर्ट गेंद देखा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के लिए बल्लेबाज शेख उसैद ने। शेर कश्मीर स्टेडियम से बराह रास्त आप ये मुकाबला इस वक्त देख रहे हैं। JKCA सीनियर मल्टी-डे फाइनल जम्मू बनाम कश्मीर, इस वक्त ये मुकाबला जारी है। लाइव एंड एक्सक्लूसिव जो है इस वक्त कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पेज पर जो है आप ये मुकाबला देख रहे हैं। एक और अच्छी गेंद युद्धवीर सिंह की जानिब से और खत्म हुआ गालिबन। अभी एक गेंद शायद इस ओवर की बाकी है। काफी खूबसूरत ग्राउंड और बेहतरीन मुकाबला इस वक्त जम्मू बनाम कश्मीर इस वक्त जारी है। युद्धवीर सिंह इस ओवर में अगली मरतबा दौड़ना शुरू, उनकी रफ्तार तेज हुई, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की शॉर्ट गेंद, इस गेंद को खेले उमदा स्ट्रोक, गैप में गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, खिलाड़ी गेंद के पीछे, रोकना नामुमकिन। गेंद जो है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। शेख उसैद के बल्ले से जो है पहला चौका लगता हुआ। साहिल पंपोश कश्मीर 11 जो है काफी मरतबा जो है बता चुका हूँ इंशाल्लाह, और एक दो मरतबा बताने की कोशिश। स्कोर जो है अभी भी अपडेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो है हम माजरत खाएं आप तक जो है स्कोर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। स्कोर बोर्ड जो है बिल्कुल हमारे सामने है, लेकिन 9 के जो है स्कोर पर अटका हुआ है, अभी भी जो है स्कोर अपडेट नहीं हो पा रहा है। उसके लिए माजरत खाएं, जो ही हमारे पास जो है स्कोर अपडेट हो जाएगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आबिद मुश्ताक लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज, इस गेंद को खेले, टाइम अच्छा था लेकिन गैप जो है इस वक्त मर्तबा जो है नहीं ढूंढ पाए बल्लेबाज कामरान इकबाल और शेख उसैद इस वक्त कश्मीर की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जियाद मागरे जो हैं आउट होकर वापस जा चुके हैं, युद्धवीर सिंह का शिकार हुए थे। अच्छी गेंद, इस गेंद को खेले स्लिप की जानिब, गेंद आउटर एज लगते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जा रही है। खिलाड़ी गेंद के पीछे हैं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब जो है रोकने में कामयाब हो गए। इस असना में तीसरा रन भी जो है मुकम्मल कर लिया है। माफ कीजिएगा 2 ही रन जो हैं इस असना में जो है दोनों बल्लेबाजों ने बना लिया है। शेख उसैद आउट होने वाले वाहिद बल्लेबाज कश्मीर की तरफ से। और क्राउड जो है काफी व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं क्राउड अलाउड नहीं है यहाँ पर, क्राउड के बिना जो है ये मुकाबला यहाँ पर जारी है। JKCA मल्टी-डे फाइनल कश्मीर बनाम जम्मू।
पहला दिन है और 3 दिनों का जो है ये मुकाबला होगा। तो अभी पहले दिन का ही जो है इस वक्त खेल जारी है। आबिद मुश्ताक अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। आबिद चले, अच्छी गेंद थी, खुशकिस्मत रहे बल्लेबाज, स्टंप से जो है काफी करीब से गेंद निकली थी और गेंद को जो है जाने दिया था विकेट कीपर के लिए। काफी खुशकिस्मत। शेख उसैद जो है गालिबन स्ट्राइक पर है इस वक्त। अच्छी गेंद थी, एक मरतबा फिर से बीट हुए, उम्दा गेंदबाजी का जो है मुजाहरा कर रहे हैं। आबिद मुश्ताक इस ओवर में अगली मरतबा चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद स्टंप में आती हुई इस गेंद को आहिस्ता से खेले। विकेट कीपर जो है जल्दी से आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। रोहित मल्होत्रा, फुरकान डार, इरशाद भट्ट हमारे साथ जो हैं जुड़े हुए हैं। सबका खैर मकदम। लेग स्टंप से बाहर, कलायों के उपयोग से मोड़ दिया है। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे। तीसरा रन भी जो है इस असना में दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। तीन रन जो हैं जुट गए हैं कश्मीर के स्कोर में। अभी भी जो है स्कोर अपडेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो है आपसे स्क्रीन के सामने जो है स्कोर बोर्ड है, लेकिन वहां पर जो है स्कोर अभी भी जो है अपडेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम माजरत का हैं कि आप तक जो है स्कोर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कश्मीर बनाम जम्मू इस वक्त ये मुकाबला जारी है शेरी कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में। काफी खूबसूरत ग्राउंड है, लश ग्रीन आउटफील्ड और तरफ जो है लाजवाब है। उमर फारूक, मुकेश शर्मा, यावर लोन, सुनील कुमार जम्मू से भी जो है काफी व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। एम कश्मीरी भाई जूम अगर और करेंगे तो जो है पिक्सल जो है इसकी टूट जाएगी। युद्धवीर सिंह एक और ओवर के साथ इस गेंद को खेले हल्के साथ से ऑन साइड की जाने। पहला रन तेजी के साथ हासिल किया और दूसरे के लिए भी जो है निकल पड़े और 2 रन हासिल कर लिए दोनों बल्लेबाजों। कश्मीर बनाम जम्मू मुकाबला जारी है। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि आपके साथ साथ जो हैं और लोग इस मुकाबले का हिस्सा बन सके। काफी बड़ा मुकाबला है। मल्टी डे फाइनल जम्मू बनाम कश्मीर। बड़े बड़े प्लेयर्स इस मुकाबले का हिस्सा है। परवेज रसूल, अब्दुल समद भी जो है इस मुकाबले का हिस्सा है। युद्धवीर सिंह आए, गेंद की अच्छी गेंद थी, इस गेंद को खेले टाइमिंग से उन भरपूर स्ट्रोक। गेंद जो है बाउंड्री की तरफ जा रही है। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, रोकना नामुमकिन और गेंद जो है बाउंड्री लाइन के बाहर। और कश्मीर के डग आउट से जो है तालियों की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। हर स्ट्रोक पर जो है अपने प्लेयर्स को चीयर अप करने के लिए तालियां बजा रहे हैं। उमर भाई स्कोर क्या 48 for 1 ओवर। तो 48 स्कोर है। एक खिलाड़ी के नुकसान पर कश्मीर का 13वां ओवर इस वक्त जो है इनिंग्स का जारी है। $90 ओवर्स का जो है एक दिन में खेल खेला जाएगा और 3 दिनों का जो है ये मुकाबला होगा। और 3 दिन के मुकाबले के बाद जो है विजेता घोषित होगा कि कौन सी टीम जो है किस पर हावी होगी और ये मुकाबला अपने नाम करेगी।
साल 48 स्कोर है कश्मीर का। एक खिलाड़ी के नुकसान पर आउट होने वाले वाहिद बल्लेबाज जियाद मागरे। अच्छी गेंद। युद्धवीर सिंह काफी यंग और टैलेंटेड प्लेयर है और आईपीएल में भी जो है ये मुंबई इंडियंस की जानिब से उनकी टीम का जो है हिस्सा रह चुके हैं। क्राउड अलाउड नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है मैच में वो जान नहीं लग रही है। अगर क्राउड होता तो काफी ज्यादा जो है और मजा आता। क्राउड को जो है अलाउड नहीं किया गया। युद्धवीर शॉर्ट गेंद देखा और जाने दिया विकेट कीपर के लिए। बल्लेबाज शेख हुसैन। स्कोर बदस्तूर 48 है, एक खिलाड़ी के नुकसान के। काफी खूबसूरत और लश ग्रीन आउटफील्ड। Hello everyone, this is Mohsen Kamar, welcoming you all to the live coverage of Kashmir Sports Watch from JKCA Stadium, Srinagar. This morning, JKCA Orange, Kashmir won the toss and decided to bat first. It was expected that Kashmir might bowl first because there were overcast conditions, but they decided to bat first, knowing that this pitch is quite flat and there won't be much help for the bowlers even if they bowl it first. Kamran Iqbal and Ziad Magre walked to the middle to start the innings for Kashmir. They got up to a good start, but Ziad kind of lost his temper while trying to go up towards covers and was caught at point. Abdul Samad got rid of him on his very first ball of the spell. Kamran is very solid from the other hand. He did play some of his typical strokes, we can say, a pull and a few cover drives as well. He's looking quite comfortable. From bowling department, Abid Mushtaq is handling the things right now. He's giving the ball some ire, and Kamran looked a bit tense playing against him a couple of times, but overall he is doing well right now. From the other hand, Sheikh Hussain, who just walked in, but he is looking set. He played a few magnificent strokes, both towards covers. Abid Mushtaq. Oh, lovely ball. There's some appeal. And Kamran walks back. There was a nick edge. Kamran looking quite disappointed. He had got a good start, but he couldn't convert it to a big one. A very thin edge. Abid Mushtaq at his usual best. Mushtaq has shown him the door. This was very well bowled. Bowled just on the 5th stump, and Kamran couldn't do much about it. Nicked it to the keeper, and JKCA lost its second wicket. The score is 48 for 2. In 14th over is in progress. Kamran walking back slowly. Now walks in Zaman Qayyum. The new main is Zaman Qayyum. He joined Ziad Magre and Kamran Iqbal walked back. They would be late to have a start like this despite being told to bowl first. By Kashmir captain Parvez Rasool, who won the toss earlier. Standing at the slips for Jammu. For Kashmir side, Parvez Rasool and others are in good touch.
Sorry everyone, there was a bit of problem in the connection. Lost you for a bit. Back into the game. Oh, there's a fumble. Jammu has got another wicket. Terrible this from a run out. Sheikh Usaid walks back. Usaid was looking very good, but he will be very much disappointed to be out this way. He wouldn't have expected to get run out after that good start. But there was confusion between both the batters and Usaid couldn't reach back. He looks quite disappointed while walking back. A bit angry as well. A run out is always something that nobody wants to take in. Disappointing. This Jammu players look quite excited because they have got a gifted wicket, I might say. Because this was wholly not expected from both the batters. Both of them came between the wickets and then Usaid couldn't make it back. Kashmir lost its third wicket. The score is now 48 for 3 in 14 overs. Now walks in Parvez Rasool. He will have to play his typical knock, I might say, because most often than not he needs to do the job of a recovery. Parvez Rasool walking towards the middle. If Kashmir has to post a good first innings total, Parvez Rasool has to step up. He has to play yet again a good knock to see his team through. He scored a knock of 149 in one of the league matches of this tournament, so one can expect that he is in a good nick. Abid Mushtaq now. Zaman is on strike. Oh, this one was flighted. Zaman defended it comfortably. Abid Mushtaq yet again. Oh, what a ball! Zaman is gone. Abid Mushtaq at his very best. Gets Jammu fourth wicket. Zaman didn't look comfortable at all at the crease. He was bowled by Abid Mushtaq. A good ball, bowled on just middle and leg, and it came big, a slight bit, and it was enough to get Zaman's leg stump. Zaman walking back without scoring. Kashmir now 4 down on 48. Kashmir in deep trouble now. 4 main wickets gone. It has again come to Parvez Rasool to rescue Kashmir from this tough situation. A poor display of cricket, we can say, after such a good start. Kashmiri batters don't look in control at all. There isn't much spin in this track, I must say, but a bit of experience of Abid Mushtaq doing things for Jammu. He took 2 wickets already, and one was an unfortunate run out, and Jihad got out to Yudhvir Singh. Score is stranded at 48 for 4 in 14 overs. This isn't something new.
most often than not, you can see Kashmir, once a wicket goes, another follows, and then it keeps happening. Wickets keep falling, one after another. The wicket looks flat from outside. There isn't much for bowlers. Poor display of cricket from Kashmir batters. After opting to bat first, they should have got off to a good start, of course. But then, once the opener Jihad Maghreb walked back, the batters didn't look comfortable at all. After Jihad, shortly Kamran departed too, and then Usaid was run out, and the latest wicket to go was Zaman Kuyum. Abid Mushtaq bowled him. Now, skipper Fazil Rashid has walked towards the middle. He, alongside Parvez Rasool, will have to form a partnership if Kashmir has to post a good first innings total. And posting a good first innings total is a must, I must say. Because once you post a good first innings total, then only you can go on to dominate in the rest of the match. But so far, Jammu looks quite ahead of the game. They have been able to get 4 top order batters of Kashmir. Now it has all come down to Parvez Rasool and Fazil Rashid. It would be interesting how these two play, because there will be a lot of pressure losing 4 wickets in the first session. It's something that no team wants to go through. But this is going to be a real test for Fazil Rashid and co. Abid Mushtaq is looking in great touch. He's got two wickets so far. First he made Kamran Iqbal nick one to the keeper, and then he bowled Zaman Kuyum for a duck. Here he comes to Fazil Rashid. Again flighted on middle and leg. Fazil defended it quite comfortably. The score is still 48 for the loss of 4 wickets after the 15 overs. This final is going to be a 3-day affair. Earlier the league matches were played in 2-day format. In Kashmir, each team played 2 matches, and best of the performers were picked for this final. I could say, according to JKCA, the best of the 15. Why they are they best? It would be known only once the match is done and dusted. Yudhvir Singh from the stand comes in with a long run up. Bowls it to the legs of Parvez Rasool, who just nicks it around for a single. Parvez is going to be the main willow yielder of Kashmir. He has to score heavily to get Kashmir out of this trouble. Fazil Rashid also needs to support him quite well, because there isn't much batting left after this. Nasir Lone is the only recognized batter in the team, and then it is bowlers. So these two have to form a partnership. Yudhvir Singh once again on the legs again. Yudhvir has been bowling onto legs of right-handers. Seems like he has a plan to get them out in the mid-wicket area. But it is contrary to the field he has set. He has 3 slips, a point, a cover. Maybe he is trying to deceive the batter. Let's see what he has in the pocket. Here he comes in once again. This one was bowled right on the 5th stump.
It did trick Fazil a bit, who faced the first two deliveries on legs. Fazil didn't look comfortable while defending this ball. It swung just a little. There are three fielders in the slips waiting for a chance. Hinan Malik, Shubham Pundir are at the slips. Seems like Fazil wasn't ready this time around. तो शुक्रिया मोहसिन भाई। कश्मीर की टीम जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है। 3 विकेटें ऑलरेडी जो है उनकी गिर चुकी हैं। परवेज रसूल और फाजिल रशीद जो कश्मीर की टीम के कैप्टन है इस वक्त खेल रहे हैं। हाँ ना सर। Parvez Rasool is at the crease while Yudhvir has the ball in hand. Yudhvir walks in. Oh, there's a peel. Oh, Parvez Rasool goes. A big wicket for Yudhvir. Yudhvir is very much elated. You can see his celebration. Why shouldn't he be? He has got the biggest wicket from Kashmir side. Parvez Rasool, who looked in good touch in the league match, couldn't do anything here. A disappointing return for him. Kashmir loses its 5th wicket. A big breakthrough for Jammu. Big wicket of Parvez Rasool. Yudhvir Singh. He was till now bowling it short and good, but then he finally pitched one up and Parvez Rasool was foxed. He was caught between the wickets. 5th wicket gone. Kashmir in deep trouble now, completely in shatters, I can see. Now walks in Nasir Lone. He will have to do a lot today. Big wicket for Jammu indeed. This is what they would have wanted, to get Parvez Rasool as soon as possible, and they were quite successful in doing that. Now can Kashmir come out of this collapse is the big question. Can Nasir Lone and Fazil Rashid play a miraculous knocks? It would be tough because Jammu bowlers are breathing fire now. They have got 5 scalps so far, which means half of the team has done. Abid Mushtaq and Yudhvir Singh leading from the front. Now Fazil Rashid has to play a skipper's knock. He has to show why he is the captain of the team. Oh, again. Abid Mushtaq has just been unplayable since this morning. Fazil Rashid wasn't in control this time. Almost nicked it to the keeper, but was lucky to miss out on an edge. Abid Mushtaq again. Abid has been a vital part of J&K team in Ranji Trophy and other leagues as well. Here he comes. This one was pitched a bit short. Fazil went to his back foot and defended it in some style. Abid Mushtaq. He's quite like Jadeja. He finishes his overs in
no time. This one comfortably defended by Fazil Rashid. He has a lot to prove here, Fazil. Half of the team has gone and he is the captain of the side, so he has to stay there and get his team out of the trouble. Abid Mushtaq. This one was again bowled a bit short. Fazil went to the back foot and tried to punch it, but wasn't that successful. Abid Mushtaq once again in this over. There are 2 slips for him now. Oh, well bowled. Abid has got that rhythm already. Picked 2 wickets. Fazil Rashid is on strike. He will have to stay there. Abid missed his run up this time. He will have to come and re-bowl this one. Abid. Oh, beautifully bowled and quite well defended as well by Fazil. Fazil and Nasir will have to fight this session. They should ensure that Kashmir loses no more wickets in this session. This is very first session of the first day, and Kashmir has already lost 5 wickets, 5 big wickets. Just come down to Nasir Lone and Fazil Rashid. Yudhvir Singh looked quite good. Got the wicket in his very first ball of the spell, and then he hasn't looked back since. He got the big wicket of Parvez Rasool in his last over. He would be wanting to get a few more wickets. But how Nasir Lone plays here would be interesting to see. Nasir can be aggressive, he can be defensive, so he has both set of games in his pocket. Now depends what kind of approach he brings to the table today. Yudhvir Singh to Nasir Lone. Nasir Lone hasn't faced a delivery yet. There are 3 slips in place for Nasir Lone. Yudhvir Singh walks in, balls it full, and Nasir Lone flicks it to the wide long on for 4. Has Nasir made his intentions clear? Will he be aggressive? It would be interesting to see. This one was pitched too full and Nasir rolled his arms around to add 4 to the Kashmir's total and open his account with a boundary. A good start for Nasir Lone. It must have released a lot of pressure from him because Kashmir is in trouble with 5 wickets down. Can this boundary give him the confidence? Let's see. It's too early to say anything. Yudhvir Singh once again from the stand. Oh, looks like he has hurt himself there. It was too wide and Nasir and Fazil snatched a single there. Good running that. As Yudhvir twinkled his ankle or what? He looks in pain. He's got down. He's been surrounded by Abdul Samad and others. Seems like there was some problem in his delivery point. He slipped or something. Jammu players now checking if Yudhvir is alright. He seems to have hurt his ankle, but looks alright as he goes back to his run-up. No. Samad at the wicket right now, marking it so that Yudhvir doesn't slip again. Yudhvir does seem to have a problem with his ankle. Will he be able to deliver as quickly as he was before, or will this? Seems like he's asking umpire for a change. Yeah, Yudhvir Singh is walking back.
won't be able to bowl, I guess. He has twisted his ankle. He's walking back in pain. There's physio now walking in. Is this serious injury, or will he be able to bowl again? If he doesn't, it would be a big blow to Jammu. There will be a bowler shot. Yudhvir was bowling beautifully. He had already got 2 wickets, and it's always disappointing to see a bowler walking back in the middle of an over. He is now with the physio. The game has paused for a bit because Yudhvir Singh hurt his ankle in the run-up. Will you? Break a comment to अपन will you to the book क्या सुन रहा क्या The game has paused for a bit because Yudhvir Singh hurt his ankle. Now Sahil Lotra has the ball in hand, I guess. He will complete this over as Yudhvir has walked back to the dressing room. Physio will look if the injury is serious in nature or not. It would be interesting to see whether he comes to bowl again or not. Sahil Lotra now. He's an off spinner. An all-rounder, basically. A batter who can bowl. Fazil Rashid on strike to face Sahil Lotra for the first time. Yudhvir was bowling very well. He had got 2 wickets, likes of Riyad Maghri and Parvez Rasool. Now Sahil Lotra with the ball in hand. Again as Fazil Rashid. Lotra. Oh, brilliantly played. This was some stroke from Fazil. He went to the back foot and punctured it towards covers for a couple of runs. Just give me a minute so that I can confirm the score. There is some problem in the scoring because the scoreboard is updated after 3-4 hours. It isn't updated after every hour. Sorry for the convenience. I will come up with the score in a couple of minutes or so. Fazil Rashid has to stand up today and get Kashmir out of the trouble. Sahil Lotra for the second time. Lovely ball. Fazil defends it comfortably. Fazil has had a tricky career so far in the Ranji Trophy. He started off well but then lost his form in the middle and then made a comeback. Has been full of ups and downs so far. This one bowled at the leg stump and Fazil guides it towards fine leg boundary for a single. Now Nasir Loan up again as Sahil Lotra. Kashmir, after winning the toss, lost wickets in quick succession and are now lagging at 5 wickets down. Sahil Lotra once again. Oh, lovely ball and well defended by Nasir. Both Nasir and Fazil have played comfortably so far. They haven't looked in much trouble, but they have to carry on. It will be interesting to see how they go on about it in the overs to come. Nasir plays it beautifully towards long on for a single.
They have to keep playing, and they have to ensure that Kashmir doesn't lose any more wickets, because 5 of the batters have gone already. This partnership is very crucial if Kashmir has to stay in this game. Nasir Lone and Parvez Rasool are in the middle, while Abid Mushtaq has the ball in hand. Abid Mushtaq has looked deadly dangerous. He has picked up 2 wickets and bowled quite well. He is the only bowler to have troubled each batter of Kashmir side since this morning. Now Nasir Lone is set to face Abid Mushtaq for the first time in this over. Abid Mushtaq bowling with 2 slips. Here he comes. Bowls it full and Nasir defends it well. Didn't try to drive it hard, just pushed it towards long off. Sorry, mid off. Score is 60 for 5 in 17 overs. Kashmir 60 for 5 in 17 overs. Hello. जलाशय क्या? Oh, this one bounced to the pitch. Abid Mushtaq. Up again as Nasir Lone. Balled on the leg stump and Nasir pushes it towards mid wicket for a couple of runs. Good running this and good batting too. Score is 62 for 5 in 17.3 overs. Spectators haven't been allowed to watch this game. It's a 3-day match, with each day expected to have 90 overs. Nasir Lone taking an inspection of the field. Abid Mushtaq. Oh, lovely bowled. There was some appeal, but I guess it had hit Nasir's bat and not the pad. Sorry, it can't be zoomed that much because then nothing will be visible. We're covering this from the stands, and that's the reason we can't zoom that much. We're trying our best to bring the best coverage, but there are some restrictions in the ground due to which we are not able to give you the kind of quality that we usually bring. Abid Mushtaq bowls this one beautifully. Very well played by Nasir. Nasir and Fazil, both of them have to be gutsy out there and don't give away their wicket. They have to stand up. Abid Mushtaq, oh, beautifully bowled. He has been sticking to that leg and middle line, and it has been deadly. Batters, when try to defend him, don't look that much comfortable as they look against other bowlers. We have no idea why JKCA is not allowing the crowd inside. We have no idea why the crowd is not being allowed here. Is there a bowling change? Yes. Ram Dayal has come back in his second spell. He will be bowling from the stand. He will be replacing Yudhvir Singh, who injured himself in the last over. So far, 5 of Kashmir batters have gone. It includes Jihad Magre, Kamran Iqbal,
Sheikh Usaid, Zaman Kuyum and Parvez Rasool. Abid Mushtaq has taken 2 wickets and Yudhvir too has got 2 scalps while one was run out. Oh, well bowled. This one swung a bit. Fazil Rashid let it go. Kanaya Vadwan is keeping wickets for Jammu, while Abdul Samad is standing at the second slip. We have already shared the playing 11 of both the teams. We'll repeat in a bit. The score is 62 for 5. Ram Dayal, the experienced campaigner, comes from the stand, bowling to Fazil Rashid. Bowled on the middle stumps and Fazil defends it comfortably. Ram Dayal has been around for a long time. He has represented J&K in Ranji Trophy in above 50 matches, which is a milestone any cricketer dreams to complete. Playing 50 Ranji Trophy matches is no joke, but he is still bowling and bowling well. But the question is whether he is good enough to play this year too. It would be interesting to see whether he makes it to the team this year or not. Abid Mushtaq and Yudhvir Singh picked up 2 wickets each while one was run out. The match is being played at Kashmir Stadium, Srinagar, between Jammu and Kashmir. It is the final of JKCA Senior Multi-Day Tournament. Score is 62 for 5, sorry. Apologies. Ram Dayal once again. Oh, well bowled. Seems like he is putting on a lot of effort, but he hasn't always been known for his pace. He rather concentrates on line and length and gets a bit of swing as well. So that's how he goes around. He doesn't have too much of pace to trouble the batters, but has some tremendous experience. Score is 62 for 5. In 18th over is in progress. This one bowled on the legs and Fazil defends it comfortably. The weather looks good now. There was some breeze in early morning. That's why the play was started a bit late. It started at 9:30 instead of at 9. Yes, Yudhvir Singh is playing. He has already got 2 wickets but was injured. He injured his ankle in the last over. Ram Dayal once again. Well bowled, but it was smartly played by Fazil Rashid. He wanted a single there, but Nasir Lone said no. It was a good call. Kashmiri players are receiving some tips out there. Fazil Rashid and Nasir Lone having a small discussion. They would probably be saying to each other that stay here, stay as far as you can, because both of them need to stay there for a long time if Kashmir has to see this tough condition. Rohan Cole is a super sub. He might come into play or not. Depends. So guys, please share this telecast so that it reaches to everyone.
Sorry for a bit of pause. There was some problem behind us. Again, Abid Mushtaq. Oh, lovely player. Well bowled. Abid Mushtaq is bowling quite well. He has been bowling from the very beginning. Nasir Lone. There's silly point in place now for him. Oh, driven beautifully. This was some extraordinary shot, and the fielder is behind it. Stopped it just near the boundary. 3 runs taken in the meanwhile. Nasir Lone played it beautifully, but couldn't get a 4 there. It was a good shot, but Abid had pitched it a bit too full. Abid Mushtaq once again. Pitch full again. This time Fazil on the strike, and he guides it towards short mid wicket. 5 batters of Kashmir are gone. They include Kamran Iqbal, Riyad Magre, Sheikh Usaid, Zaman Kuyum and Parvez Rasool. Abid Mushtaq once again in this over. Balls it full, and what a shot that. This was some punch from Fazil Rashid as he gets 4. Extraordinary shot this. It was pitched short, and Fazil got into his back foot and punched it towards wide long on boundary for a 4. Both Fazil Rashid and Nasir Lone have looked comfortable at the crease. That means there isn't much in the wicket, and which is this one was driven hard. Well fielded by Hinan Malik in the covers. So as I was saying, both Nasir Lone and Fazil Rashid have looked comfortable at the crease. That means there isn't much in the wicket, and the batters who turned back and they aren't those demons in the pitch that we usually see here. The wicket is flat. The ball is coming nicely onto the bat, but the wickets that Kashmir lost were mostly because of batters' error. Riyad Magre departed while playing an uppish drive. Kamran Iqbal was outfoxed by an outgoing delivery by Abid Mushtaq, while Zaman Kuyum too was bowled by Abid Mushtaq, and then Parvez Rasool was caught in the middle of wickets. Ram Dayal once again. This time to Nasir Lone. Nasir Lone defends it comfortably. Kashmir has lost 5 wickets at the score of 69 in 20 overs. As everyone has been asking for the playing 11, I will repeat the playing 11 once again. The Kashmir team comprises of Fazil Rashid, who is the skipper of the side, Kamran Iqbal, Sheikh Usaid, Riyad Magre, Zaman Kuyum, Parvez Rasool, Nasir Lone, Imtiaz Ganai, Shahrukh Dar, Umar Nazir, and Mujtaba Yusuf. Again bowled a bit short by Ram Dayal, and Nasir Lone defends it. The Jammu playing is Shubham Pundir, who is the captain of the side, then Suryansh Raina, Hinan Malik, Shubham Khajuria, Abdul Samad, Abid Mushtaq, Ram Dayal, Sahil Lotra, Kanaya Vadwan, Yudhvir Singh and Rohit Sharma. Yes, Nasir Lone is at the crease, while Fazil Rashid is at the non-striker stand. Ram Dayal comes from the tee end. Bowls it short this time, and Nasir Lone pulls it in safe area. The mid-wicket fielder comes in and stops it from going to the boundary. Nasir Lone meanwhile takes a single. The score has moved to 70 now. 70 for the loss of 5 wickets. The 21st over in progress. Nasir Lone has shown a bit of aggression despite
despite the collapse earlier on collapse, while Fazil Rashid is being defensive at the other end. He's ensuring that no more wickets fall in this session. Ram Dayal once again. This one beautifully played towards slips. He wanted to guide it towards third man boundary, but was cut short by Samad at the second slip. The score is 70 for 5 with 21st over in progress. Nasir Lone and Fazil Rashid is at the crease. Fazil is right now playing, while Nasir is at the non-strikers end. Ram Dayal comes to bowl. Tries to bowl a bouncer, which Fazil Rashid leaves comfortably. Ram Dayal is bending his back, but Fazil seems unmoved as of now. Aqib Nabi is not playing. J&K is playing with Kashmir is playing with 3 pacers and a spinner, and Nasir Lone being the all-rounder, the 4th pacer in the 11. Ram Dayal once again bowls it on the legs, and Fazil defends it comfortably. End of the over. Another over gone. As you can yourself see that there aren't any demons in this wicket, but still Kashmir lost 5 wickets, and all of them seem to be in a hurry, which has always been a problem with Kashmiri batters. They try to go after bowlers earlier on, but in test cricket, in multi-day cricket, you have to show patience at the crease. You can't be going after bowlers from the ball one. You have to settle down at the crease, take those singles before you can score boundaries. Abid Mushtaq continuing from the spectators' end. Abid is bowling with 1 slip and a slip point. Comes in again. Beautifully played. Nasir Lone is showing no mercy at all. He drives it beautifully towards cover boundary for a 4. तो शुक्रिया मौसम भाई, फिर आप सबको मेरी तरफ से सलाम। कश्मीर की टीम जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चुका है। 5 विकेटें जो हैं कश्मीर टीम की गिर चुकी है। नासिर लोन बैटिंग कर रहे हैं। बेहतरीन चौका लगाया था पिछली गेंद पर नासिर लोन ने, एक मरतबा फिर से तैयार। अच्छी गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी, लेकिन टर्न काफी ज्यादा जो है हो रही है। आबिद मुश्ताक गेंदबाजी कर रहे हैं। उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा किया है आबिद मुश्ताक ने अब तक। तो मेरी गुजारिश रहेगी आप सबसे, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, 600 से ज़ायद व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इस लाइव नशरियात को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जो हैं आपके साथ साथ ये मुकाबला देख सकें। अच्छी गेंद नासिर लोन और फासिल रशीद जो है इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। आबिद मुश्ताक कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से जो है इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। आबिद मुश्ताक चले, अच्छी गेंद स्टंप्स में आती हुई इस गेंद को दिफाई अंदाज से खेले। फाजिल रशीद, कैसरुल हक, दानिश, रतुल फारूक अहमद, मुबशर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई आपके प्यार के लिए। आबिद मुश्ताक इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने फाजिल रशीद है, शदीद मुश्किलात में फंसी हुई
कश्मीर की टीम उम्दा स्ट्रोक फाजिल रशीद के बल्ले से और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। माफ कीजिएगा, नासिर लोन जो है इस वक्त स्ट्राइक पर है और बेहतरीन स्ट्रोक खेल कर जो है गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया नासिर लोन। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे गुजारिश यही रहेगी कि इस लाइव नशरियात को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ जो है और भी लोग इस महा मुकाबले को जो है घर बैठे देख सकें। लोन माही यहाँ पर क्राउड भी अलाउड नहीं है, तो कैमरा की तो जो है बात ही नहीं है। काफ़ी मुश्किलात के बाद और काफ़ी परमिशन लेने के बाद जो है हम इस वक्त आप तक ये लाइव नशरियात पहुँचा रहे हैं। अपने व्यूअर्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है करनी पड़ी है आज हमें इस ग्राउंड में पहुंचने के लिए। काफ़ी मुश्किलात के बाद जो है हमें परमिशन मिली है इस वक्त और हम कोशिश कर रहे हैं आप तक ये मुकाबला पहुंचाने की। बॉलर नया ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है। लेग से बाहर हल किया से इस गेंद को फ्लिक के सूरत में निकाल दिया, पीछे खिलाड़ी मौजूद, उम्दा फील्डिंग और इस फैसला में जो है दूसरा रन हासिल कर लिया है दोनों बल्लेबाज ने। तो प्लेइंग 11 कश्मीर की टीम की जानिब से जो है ये 11 खिलाड़ी इस मैच का हिस्सा है। फाजिल रशीद कैप्टन है, कामरान इकबाल, शेख उसैद, जियाद मागरे, जमान कुयूम, परवेज रसूल, नासिर लोन, इम्तियाज गनाई, शाहरुख डार, उमर नज़ीर और मुश्तबा यूसुफ, ये 11 खिलाड़ी हैं जो कश्मीर की तरफ से इस मुकाबले का हिस्सा है। JKCA सीनियर मल्टी-डे फाइनल है, 3 दिनों का जो है मुकाबला होगा और 90 ओवर्स का जो है खेल जो है एक दिन में खेला जाएगा। 90 ओवर्स का खेल होगा एक दिन में। अच्छी गेंद की पड़ने के बाद हल्की सी जो है मूवमेंट हुई थी बाहर की जानिब और छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए बल्लेबाज। जम्मू की टीम का प्लेइंग 11 शुभम पंजर कैप्टन है, सुरनीश रैना, हनान मलिक, शुभम खजूरिया, अब्दुल समद, आबिद मुश्ताक, उम्दा गेंदबाजी की है आबिद मुश्ताक ने अब तक। राम दयाल, साहिल लोथा, के वाधवन, युद्धवीर सिंह और रोहित शर्मा प्लेइंग 11 का हिस्सा है। तो व्यूअर से मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि इस लाइन नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा। लेग स्टंप से बाहर बल्ला अड़ाया था लेकिन गेंद को छूने के बगैर जो है गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। बट जावेद, सैफ अहन, सजाद अहमद, इम्तियाज मंजूर, मुदी मागरे, सैम आकिब, शौकत गुल, वानी, काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स जो है हमारे साथ जुड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से सभी व्यूअर्स के जो है कमेंट्स पढ़ना इस वक्त हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो बीच बीच में हम कोशिश कर रहे हैं आपके कमेंट्स जो है पढ़ने की। अगली गेंद के साथ बॉलर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद थी, इस मरतबा हल्की सी लो रही थी और ऑन साइड की जानिब मिड ऑन की जानिब खेले थे। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, उन्होंने फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर बोर्ड जो है यहाँ का इस रेगुलर बेसिस पर जो है काम नहीं कर रहा है। काफ़ी देर के बाद जो है उस स्कोर बोर्ड में जो है रन्स ऐड किए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं आप तक स्कोर पहुंचाने की। बॉलर इस ओवर में अगली मरतबा दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद अच्छी गेंद थी, इस गेंद को खेले ऑन साइड की जानिब और चहलकदमी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल कर लिया। काफी मुश्किल में जो है फंसी हुई है और एक बड़ी पार्टनरशिप की और लंबी पार्टनरशिप की जरूरत है इस वक्त कश्मीर की टीम को, क्योंकि ओवर्स की कमी नहीं है। जितनी ज्यादा देर जब प्लेयर जो है क्रीज में टिके रहेंगे उतना जो है कश्मीर की टीम के लिए अच्छा होगा। परवेज रसूल भी आउट होकर वापस जा चुके हैं, जमान कुयूम भी आउट होकर वापस जा चुके हैं, शेख उसैद भी जो है आउट होकर वापस जा चुके हैं। इस ओवर में अगली मरतबा बॉलर आए, शॉर्ट गेंद पुल किया, ऑन द स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है, गैप जो है नहीं ढूंढ पाए इस मरतबा।
एक और ओवर जो है किताम पजीर हो चुका है। बशीर अहमद, सजाद बट, फिरदौस बट, मंजूर महराज। स्कोर जो है अभी हमारे पास नहीं पहुंचा है। स्कोर बोर्ड यहाँ पर ग्राउंड में लगा हुआ है लेकिन अभी अपडेट नहीं हो रहा है। जो ही जो है लेटेस्ट स्कोर जो है उसमें अपडेट होगा, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सईद तहा बुखारी, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं आपको बताते चले कि ये जो है JKCA मल्टी-डे फाइनल इस वक्त जारी है। जम्मू और कश्मीर की टीमों के दरमियान ये मुकाबला जारी है। 3 दिन का मुकाबला होगा और 3 दिन के बाद जो है विजेता इस मैच का जो है घोषित हो जाएगा। मल्ला अरशद, गुलाम मुहीद्दीन, साकिब शफी और मीर आसिफ, आपका तहे दिल से शुक्रिया स्टार्स भेजने के लिए। नए ओवर के साथ नए बॉल, अच्छी गेंद की हवा में थी लेकिन 2 स्लिप्स के दरमियान गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन की। पहली और तीसरी स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद थे, उन दोनों के दरमियान गेंद निकलकर जो है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन की। Nasir Loan was a bit lucky there. It went between the third and second slip. It was very well bowled by Rohit Sharma. Rohit Sharma is a tall, lanky guy who likes to bowl at full. It sometimes becomes a bit tough to pick up the fuller delivery of a long, tall bowler. Nasir Loan but had played it with soft hands. That's the reason it didn't carry to the second slip. Nasir Loan has been a bit aggressive despite 5 wickets having fallen. The score is 82 for 5 in 23 overs. Rohit Sharma once again bowls it on the leg stump. Nasir Loan tried to heave it towards mid-wicket boundary but wasn't successful this time around as fielder cut it short at the short mid-wicket. Abid Mushtaq is standing at the short mid-wicket. Jammu fielders are looking enthusiastic. Why wouldn't they be? They have been able to get 5 big wickets despite there being nothing in the pitch. My assessment says that this pitch has neither spin in it nor any swing. Kashmiri batters played too ordinarily and lost their wickets to simple straight balls. This one was an effort ball from Rohit Sharma. He's also bending his back quite hard. Nasir Loan let it go this time. Nasir Loan is a naturally aggressive batter, but he will need to show some patience as well because a wicket here will perish JKCA Orange team. Rohit Sharma bowling from the spectators' end for JKCA Blue. There seems to be some problem with the side screen. Now the game is on again. Rohit Sharma from the spectators and box end bowls it beautifully. This is the line you should be bowling to Nasir Loan. On and around 5th stump. Meanwhile, we are going back to the toss. Toss was won by JKCA Orange and they opted to bat first, which was a bit surprising since mostly teams prefer to bowl first in this track because there is some help on offer for bowlers in the morning session, but this time JKCA Orange opted to bat first. The decision seemed to be a good one, but then there were
flurry of wickets. Jihad departed. Wickets kept falling. Rohit Sharma once again in this over. Again some problem with the side screen. The batsman hasn't been happy with it. The reaction from the umpire says it all. The umpire is also very unhappy with people moving around the side screen. The bowler would be the most angry guy here. He had to cut short his run up twice in this over. Rohit Sharma once again bowling to Nasir Lone. Well bowled again. Nasir Lone is leaving it good. He isn't touching the balls which are bowled outside the off stump. He's leaving them alone, which is a good strategy. In longer format, the more you leave the balls alone, the better it is. The better are your possibilities of staying at the crease. Fazil Rashid seems to be signaling something to the fielder there, probably telling him the ball isn't bouncing that much. Rohit Sharma is a tall, lanky guy, so one expects him to bowl quite short, but as of now it seems there isn't much bounce in the track. Rohit Sharma once more. This one had kept a bit low, but Nasir Lone managed it and defended it comfortably. This is Javed Ganai running in quick, providing the batters with drinks. Kashmiri JKCA Orange, the Kashmir team, will be a bit disappointed with how they played earlier this morning. The 5 batters departed shortly without making much impact. Right now, Nasir Lone and Fazil Rashid are at the crease. The score is 82 for 5. शुक्रिया मोहसिन भाई। 82 स्कोर है कश्मीर की टीम के और 5 विकेटें जो हैं उनकी गिर चुकी हैं। 25 ओवर्स का खेल जो है इख्तिताम पजीर हो चुका है। ड्रिंक्स का वक्फा इस वक्त चल रहा है। Dar Hilal playing 11 of both teams. Amir Bhatt, commentator, Nasir Lone. तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव नशरियात को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार जो है देने के लिए अगर कोई व्यूअर जो है हमें स्टार भी भेजना चाहे तो आपका तहे दिल से खैर मकदम। बैटिंग शूटिंग बॉलर कैसा है? फाजिल रशीद और नासिर लोन जो है इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं कश्मीर की टीम के लिए। हेलो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं आप सबसे जो है एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि क्राउड जो है यहाँ पर अलाउड नहीं है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस मैच का इंतज़ार कर रहे थे तो घर बैठे उन सब लोगों तक ये मुकाबला पहुंचाने के लिए जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं आप इस लाइव नशरियात को शेयर ज़रूर कीजिए। नए बॉल अच्छी गेंद 5 विकेटें ऑलरेडी गिर चुकी हैं और इस वक्त कश्मीर की टीम को जो है अशद ज़रूरत है एक लंबी पार्टनरशिप की और फाजिल रशीद और नासिर लोन जो है इन पर काफ़ी नज़रें जो हैं टिकी हुई हैं कश्मीर की टीम की जानिब से। Sahil Lotra coming from the stand. He is a right arm off spinner. He is quite smart with the ball as far as I have seen him. This one was bowled short and Fazil Rashid heaved it towards point boundary for a 4. It was beautifully played by Fazil. Now he has also started opening his arms. There was width on offer on this delivery and he lashed on it. Got himself and JKCA Orange team another 4.
The score is probably 90. We are facing some problems in updating score constantly because the scoreboard gets updated after 3-4 overs. Apologies for that. Sahil Lotra once again coming in to bowl against Fazil Rashid. This one was also bowled short and Fazil punctured it towards cover boundary. Abdul Samad is chasing the ball and he was successful in cutting it down. 3 runs taken in the meanwhile. Fazil Rashid is playing smartly. He knew there's some gap between point and cover and he smartly put it in between them. Now Nasir Lone is coming on to the strike. The wicket looks good to bad, meaning that JKCA Orange, the Kashmir team, will have to put on a big first innings score. And to ensure that, both Nasir Lone and Fazil Rashid will have to stay at the crease for at least 2 sessions. These are last few overs of this first session. After that, there will be a lunch break. Sahil Lotra to Nasir Lone now. Ball beautifully and Nasir Lone defends it quite comfortably. There hasn't been much spin on this track. The ball is coming nicely onto the bat. Sahil Lotra once more. This one was bowled way too on leg stump. Nasir Lone didn't attempt and shot on this one. Let it go to the wicket keeper. Sahil Lotra once more. Well bowled. This one was flighted and Nasir Lone put on his forward defense. 26 overs are bowled probably. We will have to use the term probably because we're not sure about the score, since the score card gets updated after 5 overs, and in between we will have to use the word probably and possibly, since it's hard to keep a track of score. Rohit Sharma has also played for Ranji Trophy for J&K. He has had a short stint in the tournament so far. The tall, lanky, fast bowler, bowling with 3 slips. Oh, what a shot! This has to be shot of the day from Fazil Rashid. He had anticipated it and played it with some grit. What a shot that was. Fazil Rashid walked down. Tremendous shot that. Courage. And Fazil now seems to have settled on the crease, showing us all what he is capable of. Rohit Sharma for the second time in this over. This one bowled a bit short and Fazil defends it without much trouble. I will have to go back to that shot. It was just magnificent. The shot of the day so far. It was a good length delivery, but Fazil Rashid managed to put it to the straight boundary. Rohit Sharma, the bowler, doesn't like a batter to hit it straight towards him. There's some effort in this ball, but Fazil left it alone. This was bowled way too out. The only sounds we are hearing are the sounds of cars moving around the street. Rohit Sharma. Bowling with 3 slips and a gully.
Rohit Sharma. One more in this over. Ball to Parvez Rasool. This one defended comfortably again. There was some extra bounce in this one. It was bowled on good length, but it just bounced a bit high than Fazil had expected. We must mention that Kashmir lost, JKCA Orange lost 5 wickets earlier on, and then Nasir Lone and Parvez Rasool have been able to put on some partnership. The score is 93 for 5. 26th over is in progress. Parvez Rasool looking quite comfortable at the crease. He will have to carry on this. Rohit Sharma. Well played again, but there was no single this time. Nasir Lone. Fazil wanted a single, but Nasir Lone stopped him, and it was a good call. There was no single. The enthusiasm that Jammu fielders were showing earlier on is kind of diminishing now, because there has been a lull because of Nasir and Parvez Rasool's efforts on the crease. They fought back brilliantly after those 5 quick wickets. Parvez Rasool for the last time in this over. Oh, this one bouncer, but what a shot! Fazil is making most of whatever is on offer. He guided it towards third man boundary, and this crossed the boundary finally. Another 4 to Fazil's name. This was played very nicely again. It bounced a bit too much, and Fazil guided it towards third man boundary for a boundary. Good display of baiting. Parvez Rasool isn't trying too much. He is just guiding the balls, showing the right path. This one, there was room on offer on this delivery, and he guided it brilliantly. So Kashmir now looks a bit comfortable, but they will have to carry on. It's just the beginning if they have to post a good first innings total. I'm handing over the mic to my fellow commentator Zahid. 93 for 5. 93 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर स्कोर है कश्मीर की टीम का। तो एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत हो, और बड़ी पार्टनरशिप जो है इस वक्त अहम होगी कश्मीर की टीम के लिए। फाजिल रशीद और नासिर लोन एक पार्टनरशिप जो है बिल्ड करते हुए एक और ओवर के साथ बॉलर आए। अच्छी गेंद स्टंप्स में आती हुई इस गेंद को शॉर्ट कवर की जानिब खेली। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा, गालिबन 30 ओवर्स के बाद जो है लंच ब्रेक होगी। इस गेंद को खेले उमदा स्ट्रोक, और गेंद जो है अंपायर के इशारे का इंतजार, शायद बाउंड्री लाइन के बाहर, बिल्कुल 6 रन का इशारा अंपायर की जानिब से। नासिर लोन के बल्ले से लगता हुआ ये छक्का। नासिर लोन जो है काफी मंजे हुए बल्लेबाज हैं, और जब खेलने के लिए आए थे उस वक्त शदीद मुश्किलात में फंसी हुई थी कश्मीर की टीम, और एक अच्छी पार्टनरशिप जो है बिल्ड करते हुए ग्राउंड से बाहर चली गई है गेंद, और इस असना में जो है ड्रिंक्स एक मरतबा फिर से जो है ग्राउंड की तरफ जाते हुए। What a shot that from Nasir Lone. He has been quite impressive since the very first ball he faced. He scored a boundary off his first ball, and since then he has looked unstoppable. He has played some tremendous shots, both down the ground and in the air as well. This was his first 6, and it was some shot. It was lifted straight over long on boundary for a huge 6. The ball had gone out of the ground, and now somebody has got it bucketed in. This is a very vital knock that Nasir Lone is playing, but one must not forget that Fazil Rasool has been standing like a wall from the other end. He is being quite smart in his batting. Whenever he finds an opportunity to put a 4, he does it, and at other times he just defends it. While Nasir Lone on the other hand is playing his natural game. He's an aggressor, he likes to go after bowlers, and he is doing exactly the same here. But he will have to make sure that he doesn't lose his wicket in the process. He will have to stay there.
two are very vital for JKCA Orange. For them to post a good total, these two have to form a very big partnership. The score has moved 100. The 100 runs have come up for JKCA Orange in the 27th over. Nasir Lone and Fazil Rashid are at the crease. I will soon update you with the individual scores of both the batters. Till then, listen to Zahid. वो ग्राउंड से बाहर गेंद चली गई थी, नासिर लोन ने एक बड़ा छक्का लगाया था। अब गेंद जो है वापस आ गई है और इस दौरान जो है पानी पीने का जो मौका मिला था दोनों उमर भाई, इंडिविजुअल बल्लेबाजों को, नासिर लोन और फाजिल रशीद कैप्टन है। फाजिल रशीद कश्मीर टीम के JKCA सीनियर मल्टी-डे फाइनल इस वक्त मुकाबला जारी। साहिल लोथरा एक और गेंद के साथ, इस गेंद को हल्के हाथ से ऑन साइड की जानिब धकेला और चहलकदमी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक रन हासिल कर लिया। अब फाजिल रशीद स्ट्राइक पर पहुंचे। नासिर लोन जो है उन पर काफी नजरें होंगी। नासिर लोन का शुमार जो है कश्मीर के चंद बेहतरीन प्लेयर्स में होता है। फाजिल रशीद टीम के कैप्टन हैं, उन पर भी जो है काफी जिम्मेदारी का बोझ आज होगा। इस गेंद को खेले, खिलाड़ी मौजूद, हल्का सा मिसफील्ड हुआ, रन लेना चाहते थे नासिर लोन, लेकिन फाजिल रशीद ने मना कर दिया। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, एक मरतबा फिर से आपसे गुजारिश करेंगे कि शेयर कीजिएगा और जो व्यूअर्स अपना प्यार जो है हमें भेजना चाहते हैं, स्टार्स जो हैं सेंड कर सकते हैं, हम आपके काफ़ी मशकूर रहेंगे। और शेयर भी लाजमन जो है इस मैच को कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मैचेस जो हैं रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलते हैं। 3 डेज फाइनल मैच है इस वक्त जम्मू और कश्मीर के दरमियान। साहिब इस गेंद को खेले वापस बॉलर की जानिब, फाजिल रशीद। साहिल लोथरा गेंदबाजी कर रहे हैं। 7-8 कदमों के रनअप के साथ फाजिल आए। साहिल स्ट्राइक पर, फाजिल ओवर खत्म हुआ। एक और ओवर का जो है इख्तिताम पजीर जो है हो चुका है। तो फिर से गुजारिश करना चाहूँगा जितने भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इस लाइव नशरियात को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इकबाल रसूल, एजाज मीर, बटलाल, फिरदौस डार, मीर फैज़, मोहम्मद अब्बास हमारे साथ जुड़े हैं। सबका खैर मकदम। Thank you, Zahid. If you guys have any questions about the match or pitch or anything, I would like to answer them in this session. Please come up with your questions and I will try my best to answer. Meanwhile, Abid Mushtaq has been brought back into the attack. Hello. Yeah? आबिद मुश्ताक चले, उम्दा गेंदबाजी की है आबिद मुश्ताक। और जब बीच में जो है काफी काम करनी होती है, उसके बावजूद भी जो है। So dear watchers, I have an update. Nasir Lone is playing on 31 while Fazil Rashid is at 26. Both of them are at the crease right now. This one played beautifully. We will keep it live, don't worry. There won't be a problem. Fazil Rashid is playing on 26 while Nasir Lone is at 31 from the other end. Abid Mushtaq bowling it quite well. He has already got 2 wickets in his tally so far. If there are any questions, please put them in the comments section. I'd be more than happy to answer. Abid Mushtaq. This one was flighted delivery and Fazil defended it in style. Hello. फाजिल रशीद इस वक्त क्रूज पर है। अटैकिंग फील्ड रखा है आबिद मुश्ताक ने और काफी ज्यादा जो है फ्लाइट दे रहे हैं, बल्लेबाज को ललचा रहे हैं बड़े स्ट्रोक के लिए।
लेकिन फाजिल रशीद जो हैं काफ़ी सीनियर प्लेयर और इनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है दिफाई अंदाज से जो है अभी तक खेल रहे हैं। अभी तो मुश्ताक इस गेंद को निकाला, लेकिन उम्दा फील्डिंग वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग और यकीनी तौर पर जो है अपनी टीम के लिए कुछ रन जो है वहां पर बचाए। महराज लोन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। फिरदौस खान भाई, क्राउड जो है यहाँ पर अलाउड नहीं है, बट आशिक हमारे साथ जुड़े हैं। फिर से आपसे गुजारिश यही रहेगी कि इस लाइव नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ सकें। नंबर करना तो JKCA मल्टी-डे फाइनल इस वक्त जम्मू बनाम कश्मीर इस वक्त जारी है। Another over comes to an end. Abid Mushtaq, who has taken 2 wickets so far, was bowling from spectators, and now Sahil Lotra again. The score is 109 for 5 wickets in 28 overs. Nasir Lone on strike with Sahil Lotra from bowling from stand. Oh, this one was bowled beautifully. It took outside edge of Nasir Lone's bat, but landed in safe area, so Nasir Lone doesn't have to worry about it. It's a 3-day match. Nasir Lone facing some problems with the side screen there, I guess. Yes, there's some problem with the side screen and the groundsmen are trying to clear it. In the meanwhile, I must inform you that Nasir Lone is playing on 31 while Fazil Rashid was on 26 in last over. This match is being played at Kashmir Stadium, Sunwar, Srinagar. It is the final of JKCA Senior Multi-Day Tournament. Sahil Lotra is an off spinner, but he bowls a bit quiet. He doesn't try to spin the ball, but rather bowls it quite straight. He tries to outfox the batter with the pace. Sahil Lotra once more. Oh, this one was bowled beautifully, but Nasir Lone defends it quite well. The toss was won by JKCA Orange, the Kashmir team, and they opted to bat first. They lost 5 early wickets, and then it has been Nasir Lone and Fazil Rashid guiding the team. Again, well played by Nasir, guides it to long on boundary for a single. Stay tuned to Zahid. No, Abid Pada is not in the playing 11. He is part of the squad but not part of the playing 11. Sahil Lotra once more bowls it well and Nasir Lone defends it comfortably. Sorry, it is Fazil at the crease. Now the field has spread too. There aren't those close-in fielders that were in place earlier. The silly point, the second slip, they have all spread because both Nasir Lone and Fazil are looking comfortable. The field has spread. There is a deep mid wicket. There is a sweeper cover at place. Imtiaz Ganai isn't playing. Yes, he is playing. He is in the playing 11. Abid Pada is in the squad but not in the playing 11. This is probably the last over of this session. Then there will be a lunch break and we will be back with our coverage. So please stay tuned to our coverage. We will be bringing you the exclusive coverage from JKCA Senior Multi-Day Final on all the 3 days. To support us, you can send us stars so that we keep going. And also please don't forget to share this live broadcast. There seems to be a problem again with the side screen as someone was walking nonchalantly from the side screen. Abid Mushtaq once again in this over bowling to Nasir Lone. Nasir Lone defends it in some style.
Nasir has been in fine touch in this innings so far, but he has to carry on. A cameo isn't going to be enough here. He has to play a big inning. Abid Mushtaq bowling very well. He has been bowling quite well since this morning. This one was bowled up and Nasir tried to heave it towards cover boundary, but was fielded well by silly point fielder. It possibly touched his boot, saving his team 4 runs, I guess. If not 4, at least 2. Abid Mushtaq once again. This one was a bit flat, but Nasir Lone defended it comfortably. Nasir Lone has shown both aggression and defensive skills so far in this innings. But credit must go to Fazil Rashid as well. He has been standing and defending everything. Nasir Lone once again defends it comfortably. If there are any questions regarding the match, you can send them in the comments section. Abid Mushtaq once again. Flighted delivery. Nasir Lone comes forward and defends it towards long on. Abid Mushtaq bowling well, but batters don't seem to have too many problems right now. Nasir Lone for the last time in this over. Oh, this one was pitched up. Nasir Lone tried to heave it, but it was cut short by the fielder at mid-off boundary. Sorry, mid-off, not boundary. The score is now 114. There's lunch break probably. Yes. After the completion of 30 overs, there's lunch break. Lunch break here at Kashmir Stadium. Nasir Lone and Fazil Rashid batted beautifully after the collapse. A mini collapse, I should say, because 5 wickets fell in no time, and since then it has been Fazil Rashid and Nasir Lone standing tall. Both of them are returning back not out, which was very important. You can see as Nasir and Fazil return back, they both seem quite confident. The Jammu team will also be quite happy because they have been able to get 5 big wickets in this very first session. You can see the JKCA Orange dugout clapping for both Nasir and Fazil for their brilliant display of batting after those early wickets. They have played quite well. Thank you for joining us, guys. We will be back after the lunch break. Please stay tuned to Kashmir Sports Watch for all the updates. We will meet you after the lunch break. Thank you. क्या कमेंट रिएक्ट कराऊं